Hello guys, once again welcome back to my channel Learning Passion and you are learning with Krishna Singhania. So guys, I think you all are well and you might be enjoying learning with me at Learning Passion. Guys, हमारा फोर्थ चैप्टर चालू है जिसका नाम है Why Democracy and What is Democracy of Civics Chapter 1. And guys, you know how much interesting and so much exciting this chapter is, and I think you all might be loving this chapter learning with me. So guys, if you like my videos, then please subscribe my channel, hit the bell icon and like button, because your subscription provides me more motivation and I can bring more changes. गाइस एक शॉर्ट नोटिस देना चाहूँगा आपको कि जल्द ही हम हमारे चैनल का नया लोगो, ट्रेलर, चैनल आर्ट सब लॉन्च करने वाले हैं। अगर आप उसे मिस करना नहीं चाहते तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए लर्निंग पैशन पे गाइस। एंड गाइस आज से मैं आपके साथ कुछ नया शेयर करना स्टार्ट करूँगा हर वीडियो में। गाइस मैं बहुत से वेबसाइट्स पे जॉइन हूँ ऑफ सोशल वर्क या फिर कहे हम जो आपको कुछ नया सिखाते हैं। यू लर्न डिफरेंट लाइफ स्किल्स फ्रॉम दैट, यू लर्न interaction, your communication increases, your if we say linkage with people, that also increases your channel of people, of your friends and society also increases. So guys, आज से आप मेरे साथ वो भी कर सकते हैं, बिकॉज हाउ मच लिंकेज यू विल हैव विद पीपल, जितना आप कम्युनिकेट कर रहे हैं लोगों से, जितना आपका बड़ा ग्रुप होगा लोगों का, उतना ही आपको फ्यूचर में बेनिफिट आएगा। बिकॉज नाउ नो वन अलोन कैन डू एनीथिंग बट अ ग्रुप कैन डू एवरीथिंग। सो गाइस लेट अस कंटिन्यू। हम हमारा चैप्टर फिर से शुरू करते हैं बिकॉज टाइम इज मनी। So guys, I said in part 3 we will be covering case study 4, that is of Zimbabwe, and some general summary of till now what we have learned. हमने अभी तक गाइस क्या क्या देख लिया। हमने देखा पहला कि डेमोक्रेसी क्या है, दैट इट इज अबाउट द rulers are elected by the people. Then we saw different case study. We saw case study of Pakistan, where we saw that the power to take final decision should be rest by the ruler selected by the people. हमने वो देखा. Then we saw second rule, that second feature of democracy, that was from the story of China and Mexico, that each and every party should have fair chance of losing and winning the election. And then we saw a case study of Saudi Arabia, Estonia, and Fiji, where we saw that each vote should have one value and every citizens of the country should have right to vote. Now guys, today we are going to start with the fourth case study, which will share with us fourth feature of democracy guys. इतने से फीचर नहीं, बहुत सारे, but at this level you need to understand this four basic base of democracy. So guys, let us start with the case study of Zimbabwe. Not much, but very interesting case study. So जिम्बाब्वे को इंडिपेंडेंस मिला इन 1980। ओके, अब जिम्बाब्वे को इंडिपेंडेंस तो मिल गया, तो वहां पे अब एक रूलिंग पार्टी बनेगी, एक गवर्नमेंट फॉर्म होगी, बिकॉज आफ्टर इंडिपेंडेंस कोई भी खाली से न बैठेगा। जिसके पास एक मौका मिला वो तुरंत कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा कंट्री का। देन द रूलिंग देन इलेक्शंस और गवर्नमेंट होगा, फॉर्मेशन होगा। जैसे इंडिया में 1947 में वी गॉट इंडिपेंडेंस। देन इन 1950 a constitution came into existence and our first election happened. जिस इलेक्शन नहीं हुआ था फर्स्ट ईयर, शायद ऐसे ही बना दिया गया था जो जो कमिटी में थे, और शायद सेकेंड ईयर से इलेक्शन स्टार्ट हुए थे। लेट इट बी व्हाट वी विल डू फ्रॉम दैट। लेट अस सी ऑफ जिम्बाब्वे। तो जिम्बाब्वे को इंडिपेंडेंस मिला, तो उनकी एक जानु पीएफ उस एक पार्टी थी वहां पे, फ्रीडम स्ट्रगल पार्टी, जिन्होंने जिम्बाब्वे को इंडिपेंडेंस दिलाने में अपना सहयोग दिया। द पार्टिसिपेटेड इन फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ जिम्बाब्वे। द पार्टी नेम वाज जानु पीएफ। ओके, तो इन्होंने ही फिर रूल करना स्टार्ट कर दिया कंट्री को आफ्टर फ्रीडम स्ट्रगल। एंड इट्स रूलर हु वाज रॉबर्ट मुगाबे। ठीक है, आपको अगर नाम हाईलाइट करना है आपकी बुक्स में तो प्लीज यहाँ पे हाईलाइट कर लीजिए, यहाँ पे देखिए। ओके, द रूलर नेम वाज रॉबर्ट मुगाबे and he became the leader, or we can say president of the country. Robert Mugabe
who was the leader or ruler of the party ZANU-PF, who participated in freedom struggle of Zimbabwe, became the president of the country. और वो टिल आई थिंक तो टिल 2000 और इन्होंने ये मेंशन नहीं किया है, जब तक वही प्रेसिडेंट बने रहे. एंड वहां पे क्या था, इधर चाइना और मेक्सिको जैसे इलेक्शंस अनफेयर नहीं थे. यहाँ पे इलेक्शंस हर रेगुलर इंटरवल पे होते थे, पर ऐसा था कि हमेशा जानु पीएफ ही चुन के आते थे. मीन्स ही वाज सच जानु पीएफ इन द सेंस रॉबर्ट मुगाबे. He was so much famous leader of in Zimbabwe that till 2000 he was only chosen. उसकी पार्टी को ही चुना गया था to form the government or become the president of the country. But according to text, Robert Mugabe did certain unfair practices to win the election. He never had fair elections or mutual acceptance election. उन्होंने हमेशा unfair mal practices यूज किया, फ्रॉड किया सिटीजन्स का. जैसे हमने मेक्सिको में देखा था कि वो लोग पेरेंट्स, गवर्नमेंट टीचर पेरेंट्स को फोर्स करते थे, एंड टाइम पे पोलिंग बूथ चेंज कर देते थे. फिर अचानक से वहां पे ऐसा भी होता है, पोलिंग बूथ पे ना एक साथ 2-3 गुंडे आ जाते हैं. गुंडे इन द सेंस गैंगस्टर्स ऑफ इलेक्शन पार्टी. इलेक्शन की जो मेन पार्टी होती है ना, उसके ये गुंडे गैंगस्टर्स घुस जाते हैं पोलिंग बूथ पे, एंड देन दे फोर्स पीपल देयर प्रेजेंट कि तुम इसको ही वोट करो, इसको ही वोट करो, नहीं तो गोली मार दूंगा या फिर ऐसा कर दूंगा. सो लाइक दिस आल्सो हैपेंस इन सम कंट्रीज. सो लाइक दिस unfair practices were practiced by ZANU-PF. But ZANU-PF always formed the government and Robert Mugabe became the president. And their government, what did they continuously change the government, constitution to increase the power of the president. यानी प्रेसिडेंट को पावरफुल बनाने के लिए हर साल कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाते जा रहे थे, जिससे जो रॉबर्ट मुगाबे ही बिकम्स मोर पावरफुल एंड लेस अकाउंटेबल. अकाउंटेबल मतलब उसका काम कम हो जाना करने का. इफ यू सी इन इंडिया, नरेंद्र मोदी हैज powers, but he has that much of accounting work. Even accounting मतलब बही खाते नहीं, accounting in the sense managing the country work. ओके, बट व्हाट रॉबर्ट मुगाबे, उसने सिर्फ अपनी पावर बढ़ाते हैं कि मेरे जो मैं बोलूँगा ऐसा होगा वैसा बोला होगा, एंड कि मैं काम नहीं करूँगा जा जाके. अब किसने बोला नहीं तो नहीं, तू आ मेरे, समझो मुझे कुछ काम है किसी मिनिस्टर से, तो मैं नहीं आऊँगा, तू इधर आएगा मेरे बुलाने पे, एंड लाइक दिस. सो ही वाज रिड्यूसिंग हिज वर्क ऑफ अकाउंटिंग एंड इंक्रीजिंग हिज पावर. एंड अपोजिशन वर्कर्स, पार्टी के जो वर्कर्स थे, हैव बीन हरास्ड बाय दिस ZANU-PF पार्टी. वो लोग उन्हें इतना परेशान कर देते थे कि वो लोग फिर इलेक्शन में पार्ट लेने को ही नहीं देखते थे. And public protest and demonstration against the government are declared illegal. What Robert Mugabe did कि इन जिम्बाब्वे अगर आप गवर्नमेंट के किसी डिसीजन के खिलाफ अगर अपोजिशन करता, इन इंडिया यू सी इन दिल्ली रोज ही ऑलमोस्ट समझ लीजिए, अभी तो कोरोना चालू है इसलिए शायद सब जन घर के अंदर है, बट इफ यू सी इन डेली बेसिस वहाँ पे रोज दंगे फसाद, व्हाट्स द नेम ऑफ ग्राउंड, जंतर मंतर है शायद, हाँ, वहाँ पे रोज हंगामे धिंगाने चालू रहते हैं. सो दे इन इंडिया people have right to vote to criticize the government policies or any decision, but in Zimbabwe it was declared as illegal. Televisions and radio were controlled by the government, and one thing they did, क्या उन्होंने जो न्यूज़पेपर्स थे ना उनको फ्रीडम दे दिया था, तुमको जो छापना है छापो. गवर्नमेंट के अगेंस्ट में छापने तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में छापो, गवर्नमेंट के इसको अगर प्रमोट करना चाहते तो प्रमोशन करो, तुम्हें जो करना करो. बट अगर किसी जर्नलिस्ट ने गलती से भी ZANU-PF पार्टी के अगेंस्ट में न्यूज़पेपर में छाप दिया, वो जर्नलिस्ट तो गया, क्योंकि भले हमने इंडिपेंडेंस दे दिया पर उन्होंने इतना डर फैला के रखा है सारे एडिटर्स में कि कोई उनके अगेंस्ट में छापता ही नहीं. और गवर्नमेंट को अगर समझे मैं एज अ सिटीजन जाके कोर्ट में केस कर दो कि नहीं आपका डिसीजन गलत है, आपको इसमें अमेंडमेंट्स लाने पड़ेंगे, तो जजेस अगर कुछ लाते भी हो चेंजेस, देन आल्सो जिम्बाब्वे पार्टी ZANU-PF नेवर फॉलोड इट, एंड वो जज को भी सरप्राइज कर देते हैं
कि सप्रेस कर देते कि नहीं, हम तुम्हारा डिसीजन नहीं मानने वाले. So we can see in the case study of Zimbabwe, though the rulers are popular amongst the people, but the work done by them is undemocratic or irregular. जैसे सानो पीएफवीसी ना फेमस थे, हर साल वो इलेक्शन जीतते आते थे, पर उनका जो वर्क था दैट वाज फॉर द डेमोक्रेसी. नो, इट वाज अनडेमोक्रेटिक अगेंस्ट द सिटीजंस ऑफ द कंट्री. उन्हें उनके राइट्स ही नहीं मिल रहे थे. राइट टू इंफॉर्मेशन इन इंडिया भी है कि हमें कोई भी जानकारी तुरंत मिल सकती है या फिर दी जा सकती है. थ्रू न्यूज़ यू गेट एनी इंफॉर्मेशन डायरेक्टली of any decision of the government, so you have right to information. But in Zimbabwe they didn't have. In India you have right to speak, right to liberty कि तुम अपने मन से किसी को कुछ भी बोल सकते हैं. I don't, but you see many people on television they directly use slam language against our rulers. But in other countries, if I say in Zimbabwe, it was illegal. You don't have that right to speak against president or anything. So like that. So some rights were there denied there. And here some that is popular governments can be undemocratic. Popular leaders can be autocratic. कुछ गवर्नमेंट पार्टीज भी जो है वो अनडेमोक्रेटिक हो सकती है, बट उनके रूलर्स अच्छे होते हैं. और कुछ रूलर्स ही ऑटोक्रेटिक होते हैं, यानी डिक्टेटरशिप प्रमोट करने वाले, या फिर खुद की क्या बोलेंगे हम, टू मेक वन मैन पावर कंट्री, वैसे भी कुछ होते हैं. So now it is we saw in the starting कि election ही सिर्फ proper हो उससे democracy नहीं कहा जाता. There are certain other features also to be checked continually to check country's democracy. Now here is one very important point, that there should be sufficient room for normal political activity including political opposition in the period before election. There should be sufficient political room of activity which includes political opposition. जैसे हमारा की लोकसभा, if it's a parliament house, that is here that political room. Okay, एक sufficient जगह है जहाँ पे political ruling leaders and opposition leaders साथ में मिलके काम करते हैं for the welfare of the country, है ना. So like that it means there. This requires that states to respect some of the basic rights of the citizens. हमने वो भी डिस्कस कर लिया. There should be everyone equal in the light of the law. हमने आपको, अगर मैंने आपने मेरा फ्रेंच रिवॉल्यूशन का वीडियो देखा, मैंने आपको उसमें बताया था that तराजू lady, she treats or she signifies that everyone living in India is equal and will be justified equally, or will be, if we say, उसे equal rights मिलेगा, उसे equal न्याय मिलेगा, ऐसा. ओके, न्याय. So similarly, there are some conditions that apply the way a government is run after the elections. है ना, एक गवर्नमेंट को किस तरह काम करना चाहिए, उसे किस किस चीज़ों पे पहले अपने डिसीजंस लेने चाहिए, या फिर उसने इलेक्शन के बाद जो वादे किए थे उसने किस तरह से पूरे करने चाहिए. दैट इज वन प्रोसीजर टू बी डन. बट इन जिम्बाब्वे हमने क्या देखा कि सिर्फ रॉबर्ट मुगाबे अपनी पावर्स बढ़ाते जा रहे हैं, अपने आप की पोजीशन ऊपर 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 तक करते जा रहे हैं, एंड द वर्क टू बी डन बाय प्रेसिडेंट ही इज गेटिंग इट रिड्यूस्ड एंड गेटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द अदर मिनिस्टर्स. And it has to guarantee, or it has to fulfill the promises given by it, है ना. और कुछ बेसिक जॉब्स भी होती है एक रनिंग गवर्नमेंट की, जो पुअर है उन्हें अपलिफ्ट करे, जो सोशली बैकवर्ड है उन्हें अपलिफ्ट करे, कंट्री में न्यू न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज लाए, ऑल ओवर कंट्री एक ह्यूमैनिटी कंसेप्ट लाए, या फिर एवरीवन को इक्वल स्टेटस दिलाने का ट्राई करें. दिस आर सम ऑफ द ड्यूटीज that are not to be said but to be done by the government. But Zimbabwe, if we see, they were just avoiding some basic rights and duties to be done by the government. So we can see here that certain rights and responsibilities that a government should hold in reality to run country smoothly, or we say at a level in which any disaster could not disbalance it. But Zimbabwe
was totally focusing somewhere else, and I think so they were more busy in forming a dictatorship in the country. So here we get fourth principle of democracy, that is a democratic rules within a limit set by the constitution, law and citizens rights. हमने देखा ना, इसलिए वो कॉन्स्टिट्यूशन हर साल अमेंड कर रहा था, क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड नहीं करेगा और कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ेगा और अपनी मर्जी से काम करेगा तो लोग क्या होंगे, चिढ़ेंगे, उसे नापसंद करेंगे, या फिर समथिंग ई दे विल हैव फ्रॉम द रॉबर्ट मुगाबे. So a democratic government should always work in the limits set by the constitution. है ना. अगर अब कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि गवर्नमेंट किसी को भी फांसी की सजा नहीं दे सकती, पर अगर गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ब्रेक करके दे रही है तो लोग को अगर फ्रीडम होगा स्पीच का तो लोग अपोज नहीं करेंगे क्या. तो आपको पहले कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाना पड़ेगा कि हाँ इंडिया में आज से फांसी देना अलाउड है, एंड देन इफ यू विल गिव देन दैट इज लीगल. सो लाइक दैट. ओके, so summary here is all. हमने जितने भी 5 points देखे. First, that a democracy is a form of government in which rulers are elected by the people. First and most basic definition of democracy. Then second, rulers elected by the people take all the major decision. Then third, elections offer a choice and fair opportunity to people to change their current rulers. Then this choice and opportunity is available to all the people on equal basis. And last, the exercise of this choice leads to a government limited by basic rules of the constitution and citizens' rights. Okay guys, so these were the 5 principles that we have discussed today, or we have summarized them, and here our part 3 video completes its part. Now from tomorrow on lecture part 4 of this chapter, we are going to do arguments against democracy and arguments for democracy. And then we are going to learn some again summaries there, then what democracy really means and something like that. Okay, and then our chapter will end. So guys, हमारा बहुत सारा इस चैप्टर का इंटरेस्टिंग पार्ट हो चुका है. अगर आपको कुछ भी डाउट हो, और इफ यू हैव एनी सजेशन दैट आई शुड ब्रिंग change in my channel or my way of communication, so you can definitely suggest me in the comment box. और आपको अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ नहीं मिलने वाला, आपको सिर्फ प्रीवियस चैप्टर्स की लिंक मिल जाएगी. ऑन रिलीजिंग ऑफ पार्ट 4 ऑफ दिस चैप्टर यू विल गेट 1 mark क्वेश्चन, important notes or paper presentation, textbook, and everything will be available to you. Guys, now comes the interesting point. That is one bonus point I say, that I will share you any way of social work that you can go forward. So guys, our government by Narendra Modi has one online website that is called My Government. Okay, शायद इसका ऐप भी है, आपको ऐप भी मिल जाएगा प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे, तो आप वहाँ से उसे चेकआउट कर सकते हैं. Now they are running one very good contest there, that is called as My Grandparents Contest or something like that. Very simple thing you have to do, that you have to just interview with your grandparents, and I think so you have to discuss how they spent their childhood and like this, and then you have to upload that your video on your YouTube channel and give your URL link to on that site, and then I think so they will check out your video and certain price will be rewarded. So like this your social contact increases, you learn more, and like आपका भी एक इमेज बनेगा. कभी भी अगर आपको अब समझे कोई भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, सो लाइक योर नेम विल आल्सो कम बिकॉज यू पार्टिसिपेटेड इन एनी ऑफ वन ऑफ द इवेंट. मैं तो हर इवेंट में पार्टिसिपेट करता हूँ उसके ऑफ इसरो. सो आई डिड ड्यूरिंग दैट आई थिंक सो मंगलयान 2 जब लॉन्च हुआ था तब उनका एक इवेंट था, मैंने उसमें किया था. देन एक हिस्टोरिकल रिसर्च था, मैंने उसमें किया. मैं परीक्षा में चर्चा के ऑल 3 सीजन में पार्टिसिपेट कर चुका हूँ. मैं नॉट बेस्ट लक कि मैं सिलेक्ट नहीं हो पाया आज अभी तक, बट आई एम ऑलवेज ट्राइंग टू डू दैट. सो गाइज आप ऐसे ही करते रहिए. एंड another thing which I will share, मुझे इसका इतना नॉलेज है नहीं, पर I heard Google is having one summer holiday camp for students, I think so from years 8 to year 16. So अगर आप उस क्राइटेरिया में आते हो तो आप प्लीज़ गूगल पर जाके चेक कर लीजिए ऑफ गूगल कैंप. उसकी लास्ट डेट है 20 जुलाई,
तो आप उसके पहले जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एंड इफ योर पार्टिसिपेशन इज वेल सो यू विल गेट अ गिफ्ट फ्रॉम गूगल इवन. So guys, thumbs up to my video if you liked it, subscribe my channel and hit the bell icon for getting instant notification of my any of the video that will be launched. So guys, bye bye.